देखो, अभी जो हमारा ये चैप्टर है उसमें से लास्ट 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ बाकी है. We will complete it. And second one, that on Friday you have to give test, right, for chapter 8 and 10 for Gujarat board and Gujket student. And this test will be for 20 theory question and 20 MCQ question. But you have to prepare perfectly, right? Now, and then after in NEET examination, NEET test on Sunday, I am going to be asked chapter number second from 11th standard, chapter number 13, and chapter number 14. These three 11th standard. Is it clear? So you have to prepare form. मैंने तो लगभग 4-5 दिन पहले कि आपको प्रिपरेशन करना है इसका. बट क्या होता है कि टेस्ट होता है संडे को, सैटरडे को टच कर, फ्राइडे को देखो, ऐसा नहीं चाहिए. और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस. बायोलॉजी में अच्छा कमांड है तो बायोलॉजी रीड करता है, फिजिक्स में अच्छा है तो बायोलॉजी को साइड में रख दिया, ऐसा नहीं चाहिए. समझे, क्योंकि एक सब्जेक्ट से स्कोर नहीं होगा, बोर्ड हो कुछ के दो या नहीं. नो डाउट नहीं में बायोलॉजी पे फोकस ज्यादा करें क्योंकि मैक्सिमम स्कोर वी विल बी कवर. बट इम्पोर्टेंट तो तीनों को, अगर आपको मिनिमम आने में मैक्सिमम व्हाट यू. सो यहाँ पे एक जो टॉपिक है उसको बुक में से लाइन पर लाइन बनाना. I think this 3 or 4 songs. So that what is biogas plant? You know that in this biogas plant, the waste dump material of animals and the main cellulose is present, right? Even in the animal, this is suppose buffalo or cow. In stomach, the portion is called rumen portion. And from this, मैं highlight दे रहा हूँ, मैं आराम से नहीं चल क्योंकि ये फोटो ऑलरेडी हो चुकी है. मैं जस्ट हाईलाइट. राइट, और कोई गैस और कोई this the mixture of these three is called a biogas. By this digestion of cellulose, this bacteria will get energy. Okay, is it clear? So methanogens, how they are functioning here, and after that, this gas will be there. And even yes, right. ये जो एनर्जी है उसका यूज जो फूड बनाने में भी होता है, ज्यादा गैस कॉस्टली होता है, वहां पे भी मोस्टली दिस इज इसमें और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कंसेप्ट नहीं. बस 10 से 12 फीट कंक्रीट हो, ये सब 10 से 12 फीट कंक्रीट, ये सब मेन पॉइंट नहीं. क्या हो गया? 1 2 3 start. Microbes in the production of biogas. Biogas is the mixture of gas containing predominantly methane produced
by the microbial activity and which may be used as fuel. You have learned that micro produced different type of gases and product during growth and metabolism. The type of the gas produced depend upon microbes and the organic substrate they utilize. In the example cited in relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulose material produce large amount of methane along with the CO2 and H2. You have to focus that this is the process in which anaerobic respiration is occurring, and that's why CO2 is produced. Even yesterday we studied about the Saccharomyces cerevisiae yeast is also performing the anaerobic respiration. Okay, and CO2 was also produced, and it may vary kind of food, bread and cheese, and the surface will become washed. Now, however, certain bacteria which grow anaerobically on cellulose material produce large amount of methane along with CO2 and H2. These bacteria are collectively called methanogens, and one such a common bacteria is called a methanobacteria. ये कैसा है पता है? जैसे कि साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप, उसमें नॉस्टॉक एनाबिना, राइट, ये सब आएगा. तो वैसे मिथेनोजेंस वो ग्रुप है, उसमें कौन सा है? मिथेनोबैक्टीरिया. These bacteria are commonly found in flush during sewage treatment, and this bacteria, याद करो, sewage treatment में देखा था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होने के बाद, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद नीचे एक्टिव स्लग था और ऊपर क्या था? या इनोक्यूलम, और उसमें इनोक्यूलम जो था वो एरोबिक रेस्पिरेशन में गया, बट जो स्लग था एक्टिवेटेड स्लज उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक टैंक में एंटर किया था. उसके बाद वहां पे भी बायोगैस बना था, और उसके बाद भी जो बाकी बचा था उसको we will reduce as a fertilizer. We can use as a fertilizer. So this bacteria are also present in rumen, a part of stomach of cattle. A lot of cellulose present in food of cattle, also present in rumen. In rumen, these bacteria help in breakdown of cellulose, play an important role in nutrition of cattle. Focus karo. Do you think we human beings are able to digest cellulose in our food? No. Why no? Because our intestine is short. So our intestine is not capable to digest this type of polysaccharide. Thus, an excreta, yani tongue of cattle, commonly called a gober, is rich in this bacteria, can be used for generation of biogas, commonly called a gober gas. Biogas plant consists of concrete tank. How many feet? 10 to 15 feet. Yani approx 1 meter, in which bio-waste are collected and a slurry of dung is fed. A floating cover is, next page karte. A floating cover is placed over the slurry, which keep on rising as it is produced in a tank due to microbial activity. जैसे कि आप कोई भी वैसे उसमें राइस बनाते हो, कुकर नहीं लेना है, उसकी बात नहीं करता, बट वो वैसल के ऊपर आप कोई भी डिश रख देते हो, तो जैसे गैस प्रोड्यूस होगा वैसे डिश वाइब्रेट होगी, राइट. तो यहाँ पे भी यही होगा, वो स्लरी है थोड़ी ऊपर नीचे, गैस प्रोड्यूस हो रहा है. तो the biogas plant has an outlet which is connected to pipe
to supply biogas to nearby house. The spent slurry is removed through another outlet and may be used as a fertilizer. समझ गए? Used as a fertilizer. Cattle dung is available in large quantities in rural area where cattle are used for variety of purpose. So biogas plants are more often built in rural area. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. Cooking or lighting के लिए भी use होता है. The picture of biogas plant is shown in figure 10.8. You can see that 10.8. Dung and water is left side is enter into digester and then digester will produce gas methane CO2 and yeah याद रहेगा methane CO2 and last कौन सा yeah H2 hydrogen. Okay, then sludge yani remaining sludge which will be used as the fertilizer after completion of process. Now the technology of biogas production was developed in India mainly due to effort of Indian Agriculture Research Institute (IARI) and KVIC, that means Khadi and Village Industrial Commission. If your school is situated in a village or near a village, it would be very interesting to inquire if there are any biogas plant nearby. No, no, there is no any nearby biogas plant in our school. Visit the biogas plant and learn more about it from people who are actually managing. No, there is no time. Okay, and it's Corona time. Okay, good action. हम लोग का लेक्चर बिकॉज 10 o'clock हुए तो शायद लेक्चर हो सकता है. तो देखते हैं ये बायोगैस प्लांट का कंप्लीट हो गया. नाउ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स काफी इंटरेस्टिंग है. माइक्रोब एज द बायो कंट्रोल एजेंट. आपको ये कैसे स्टडी करना है पहले तो आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ. यहाँ पे क्या सपोज this insect is infected and the product आपको यहाँ भी माइक्रोब यूज कर सकते हो. ऑब्वियसली यहाँ पे माइक्रोब यूज कर सकते हो. कैसे? तो आप ये प्लांट में कुछ वायरस इंजेक्ट कर दो और ड्यू टू दिस वायरस when this insect feed the plant, they feed this virus and this virus will kill insect. Otherwise, some product will synthesize in plant like this virus. So it will kill the insect or the activity of insect. So it is benefit for plant. So microbe can be used like this. Is there any other thing? Yeah. This is the plant, suppose. And these are insects which are using. तो इंसेक्ट को किल करने के लिए फार्मर ने यूज किया इंसेक्ट. So we do not have to use this chemical. So what is the option? What we have to use instead of this chemical? The answer is this bacteria. And the name of the bacteria is Bacillus thuringiensis. BT. This BT have plasmid. You know very detailed about this because this was the topic of chapter number 12 of this 12 is already complete. आपको मैं बोल देता हूँ आपका 11 चैप्टर बाकी हम चैप्टर 3 चैप्टर इस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं ये स्टार्ट करूंगा मंडे से 11 चैप्टर most important biotechnology. So this is the BD
and this is the crygene. And this crygene is responsible to synthesis some protein, toxic protein. But when at this time, this is the plasmid, we are producing more million plasmid because we require a million of this, not sufficient quantities. So after that, this bacteria is injected into host plant, and in host plant, the crystal protein is synthesized, and this will enter inside and kill inside by entering into midgut. Midgut में और प्रोड्यूस करेंगे, midgut में और प्रोड्यूस करेंगे, और वैसे यहाँ पे ये बैक्टीरिया का यूज हुआ और ये इंसेक्ट किल करने के लिए इंस्टेड ऑफ केमिकल। इवन केमिकल का ऑप्शन और कोई है, ये ऑप्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग। Organic farming. Organic farming is the another main use. और ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हम प्लांट डेवलप ग्रो कर सकते हैं, जिसमें कोई साइड इफेक्ट होगी ऐसे यहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह all are not necessarily disappear. Okay, so for controlling plant disease. In modern society, these problems have been tackled increasingly by use of chemicals, by use of insecticide and pesticide. These chemicals are toxic and animal alike and have been polluting our environment, soil, groundwater. Right, soil को भी pollute कर रहा है कौन chemical, कौन से insecticide, pesticide, even fruit, vegetables, crop plant को भी infect कर रहा है. Our soil is also polluted through our use of pesticide to remove weed. Now, biological control of pest and disease.
That is a method of controlling pest that really on nature tradition rather than introduce chemical. Yes, फिर से read करो. In agriculture, there is method of controlling pest that relies on natural predation rather than introduce chemical. Natural predation यानी क्या? मैंने अभी बोला कि कोई अगर कोई इन्फेक्ट कर रहा है प्लांट को तो उसको उसका यूज करने ऐसे प्रेडेटर अगर मिल जाए तो बेटर है. वहां पे केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा. यानी इंसेक्ट को खा जाए ऐसा कोई निमेटोड है तो निमेटोड को प्लांट पे डेवलप करो, ग्रो करो, बट वो निमेटोड प्लांट को नुकसान डैमेज नहीं करना चाहिए. समझ गए? तो फिर से रेड करो. यहाँ पे केमिकल इंट्रोड्यूस करो. इससे बेटर है कि आप नेचुरल प्रेडेटर का यूज करो. वो डायरेक्टली उसका यूज कर लेंगे. जैसे कि कोई प्लांट का फार्म है, सपोज ले लो फार्म है, वहां पे कई सारे बर्ड्स होते हैं. वो इंसेक्ट को यूज कर लेते हैं. तो बर्ड का डेवलपमेंट करो, बर्ड को ग्रो करो वहां पे. okay? बस यही बोल रहे हैं. सो नेचुरल प्रेडेशन करवाओ. और की बिलीफ of the organic farmer is that biodiversity further has. क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, राइट. उसकी वजह से क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी मिलेगी. बायोडाइवर्सिटी कैसे मिलेगी? तो मैं आपको बोल देता हूँ. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी क्या? तो वर्मी कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे, जिसमें इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट मीन्स कई बार क्या होता है, तो अलग अलग प्लांट, अलग अलग क्रॉप वहां पे फार्म पे प्रोड्यूस डेवलप करवाते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है, तो एक एक जो मिनरल होता है एक ही टाइप का, वो एकदम से लॉस नहीं हो जाता है. और अलग अलग मिनरल का यूज होगा सॉइल में से, राइट. सो धीरे धीरे वो बेनिफिट करेगा. अलग अलग होना चाहिए. ओके. नाउ देन उसको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिटी से अलग अलग टाइप के स्पीसीज के प्लांट डेवलप करके तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है. और जो फार्म है, राइट, फार्म है उसका सॉइल की फर्टिलिटी बेस्ड रहेगी. तो more variety a landscape has, the more sustainable it is. समझते? तो जो सॉइल है, लैंडस्केप है, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी वो भी और हो जाएगी. An organic farmer therefore work to create a system where the insects that are sometimes called a pest are not eradicated but instead are kept at manageable level by a complex system. समझ गए? ये क्या बोल रहे हैं? सुनो, यहाँ पे आपको जो पेस्ट है या फिर और कई सारे इंसेक्ट है, राइट, उसको टोटली रिमूव नहीं करना है. और कई सारे राइट पेस्ट होते हैं या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट और इंसेक्ट होते हैं. तो ये साइकिल आपको चलाना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपको कोई केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा. और ये सभी साइकिल जैसे कि इकोसिस्टम में साइकिल चलनी चाहिए वैसे कंटिन्यू चलती रहेगी, राइट. सो मैनेजेबल लेवल बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ checks and balance within a living and vibrant ecosystem. So, contrary to the conventional farming practice, which often use chemical method to kill both useful and non-useful. आगे देखते हैं. Useful and non-useful यानी harmful life form indiscriminately. This is holistic approach that seek to develop an understanding of web of interaction between myriad of organisms that constitute the field fauna and flora. So knowledge ना हो और आप केमिकल से यूज कर दो तो जो इंटरेक्शन है बिटवीन कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल के बिटवीन, ओके, राइट, फौना एंड फ्लोरा, उसके बिटवीन जो इंटरेक्शन है वो यहाँ पे नहीं रहेगा और जो साइकिल है वो प्रॉपर नहीं चल पाएगी. द ऑर्गेनिक फार्मर hold the view that the
eradication of creature that are often described as pest is not only possible but also understandable, undesirable. For without them, the beneficial, predatory, and parasitic insect which depend upon them as food or host would not be able to survive. फिर से रीड करो क्या बोल रहे हैं एकदम इजी है द ऑर्गेनिक फार्मर होल्ड द व्यू दैट ऑर्गेनिक फार्मर में ये कंसेप्ट ये मीनिंग अंडरस्टैंडिंग होती है कौन सी अंडरस्टैंडिंग तो देखो लिखा है होल्ड द व्यू दैट eradication of creature that are often described as pest is not only possible but also undesirable कि पेस्ट का रिमूव करना वो नॉट ओनली पॉसिबल बट वो जरूरी भी नहीं है राइट समझ में आया ऐसा नहीं है कि नॉट पॉसिबल है बट जरूरी भी नहीं है कि उसको क्यों रिमूव करते हो पेस्टिसाइड क्यों यूज करते हो नहीं करना चाहिए फॉर विदाउट देम यानी विदाउट यूज ऑफ देम beneficial predator and parasitic insect which depend upon them as food or host would not be able to survive ये क्या बोल रहे हैं अगर आप ये अगर कोई वहां पे इंसेक्ट है या फिर कोई पेस्ट है या बैक्टीरिया है या फंजाई है उसको किल कर दोगे सो दो द बेनिफिशियल प्रेडेटर यानी जो पोलिनेशन में यूजफुल होगा इंसेक्ट हो गए या फिर कई सारे बी हो गए या फिर कई सारे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बटरफ्लाई हो गए तो बेनिफिशियल प्रेडेटर है बट या फिर पैरासाइट इंसेक्ट बोलते हैं राइट कि जो डिपेंड थे वो फंजाई या फिर बैक्टीरिया पे बट वो अब नहीं आएंगे क्योंकि उसका फूड अब नहीं है राइट और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव thus the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependence on toxic chemical and pesticide. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life forms that inhabit the field, predator as well as pest, and also their life cycle. फिर से यानी क्या हुआ जो बायोलॉजिकल फार्मिंग है उसका अप्रोच यूज करो क्योंकि उसको जो इंसेक्ट है उसकी लाइफ साइकिल आपको पता होनी चाहिए इसलिए लिखा है कि एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग अप्रोच इज बिकम फैमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म देन इनहेबिट द फील्ड कि भाई कैसे अडॉप्ट करते हैं फील्ड पे प्रीडेटर के साथ कैसे एज वेल एज पेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक इवन ऑल्सो देयर लाइफ साइकिल पता होना चाहिए पैटर्न ऑफ फीडिंग and in habitat that they prefer. This will help develop appropriate means of biocontrol. समझ गए? The very familiar beetle with red and black marking, the ladybird and dragonfly are useful to get rid of aphid and mosquito respectively. यानी ladybird किसका यूज करेगा? एफिड का यूज करेगा और ड्रैगन फ्लाई है वो मॉस्किटो का यूज करेगा राइट इसलिए यहाँ पे बोला है कि डायरेक्ट आप एफिड को किल कर दोगे तो उसके बाद लेडी बर्ड नहीं आएगा राइट और मॉस्किटो को किल कर दोगे केमिकल से तो ड्रैगन फ्लाई नहीं आ पाएगी राइट तो अब वो नहीं आएगा तो पोलिनेशन कैसे होगा ये समझ में आना चाहिए एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in order to control butterfly. Caterpillar is the bacteria. फिर से example of microbial control agent that can be introduced in order to control butterfly. Caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis. Right? जो caterpillar है butterfly caterpillar उसको किल करने के लिए केमिकल नहीं बट बैक्टीरिया यूज हुआ बीटी these are available in सचेट ड्राइड स्पोर ये राइट ये बीटी है वो सचेट में मिलता है राइट ड्राइड स्पोर में पाउडरी फॉर्म में मिलता है विच आर मिक्स विथ वाटर एंड स्प्रे ऑन टू वेलनरेबल प्लांट सच एज ब्रासिका यानी राई एंड फ्रूट ट्री ओके
where these are eaten by insect larvae in the gut. Which gut? Midgut of the larva. The toxin is released and larva get killed. The bacterial disease will keep the caterpillar but leave other insect unharmed. दूसरे insect को कुछ नहीं करेगा ये bacteria. Because of the development of method of genetic engineering in last decade, right? The scientists have introduced Bt toxin gene into plant, and such plant are resistant to attack by insect pest. Bt cotton is one such example, which is being cultivated in some state of our country. You will learn more about this chapter. A biological control being developed for use in treatment of plant disease in the fungus trichoderma. A biological control being developed for use in treatment of plant disease in fungus trichoderma. याद करो क्या था? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम याद आया? साइक्लोस्पोरिन ए बना रहा था, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ड्यूरिंग यूज हुआ था, immunosuppressive agent. Okay, so the biological control being developed for use in treatment of plant disease in fungus. Trichoderma species are free living fungi that are very common in root ecosystem. They are effective biocontrol agent of several plant pathogens. Then baculovirus, it is very interesting. Please focus. Baculovirus are pathogens that attack insect and other arthropod. The majority of baculovirus used as biological control agent are in the genus Nucleopolyhedrovirus. Nucleopolyhedrovirus. These viruses are excellent candidates for species specific, यानी ये वायरस है वो स्पेसिफिक स्पीसीज को ही कंट्रोल करेगा. एंड नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल एप्लीकेशन, यानी वो रेंज है वो काफी नैरो है. यानी क्या नैरो रेंज? यानी क्या? तो भाई इतनी रेंज को ही ये किल कर सकता है, राइट? They have been shown to have no negative impacts on plant and mammals and bird and fish and even on non-targeted insect. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to add in an overall integrated pest management IPM program, or when an ecologically and sensitive area is being treated. Okay. Now microbe as a biofertilizer. आपको कहे बायोफर्टिलाइजर क्या है, तो आपको मैं बोल देता हूं यहाँ बायोफर्टिलाइजर एकदम इजी पॉइंट है. What we'll study in biofertilizer, that already we have been studied about biofertilizer, that this is the plant and this is the root. This is the plant and these are the root, and the rhizobium bacteria is living symbiotically with this plant. Okay, so this is the rhizobium bacteria, and this rhizobium has the capacity to fix nitrogen, and this nitrogen will uptake by plant and the food synthesized by this plant, which will given to rhizobium, right? Why the rhizobium is required? Because 78% nitrogen are present in atmosphere, but directly this plant is not capable to trap this nitrogen. So the nitrogen will trapped by this bacteria. Okay. Even there are different form like ammonia, even nitrite, even nitrate. These are the different form in which this ammonia is fixed. Clear? So nitrogen, even some free living bacteria you will also found in this free living like Azotobacter and Azospirillum. These are the free living bacteria which are fixing nitrogen in soil, and then it will be reached to root. And in some plant at root, some fungi याद रखो ये फंजाई जो है वो क्या करेगा,
तो नीचे से phosphorus का absorption करेगा. Okay, phosphorus will be absorbed by this fungi and it will be given to plant. So this is called also symbiotic relationship. But यहाँ पे mycorrhiza बोलेंगे. Mycorrhiza. क्यों mycorrhiza? Fungi plus root. It is called a mycorrhiza. Mycorrhiza. It is clear? So phosphorus will be absorbed. Clear? Clear? बराबर है? चलो next. वो देख लेते हैं. कहाँ गया? लास्ट से देखना पड़ेगा. लास्ट लाइन से देखते हैं. Microbe as biofertilizer. With our present day lifestyle, environment pollution is major cause of concern. The use of the chemical fertilizer to ever increasing the use of chemical fertilizer to meet the ever increasing next line देखते हैं. ever increasing demand of agriculture produce has contributed significantly to this pollution. यानी केमिकल का कम से कम यूज हो ऐसा डिमांड है. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizer and there is large pressure to switch to organic farming to use a biofertilizer. Okay, biofertilizer are organisms that enrich the nutrient quality of soil. The main source of biofertilizer are bacteria, fungi, and cyanobacteria. You have studied about nodule on root on leguminous plant pe, and formed by symbiotic association of rhizobium. This bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form, which is used by plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Some example like azospirillum and azotobacter, free living nitrogen fixes are. Thus enriching the nitrogen content of the soil. Now, fungi are also known to form symbiotic association with plant mycorrhiza. Many members of genus Glomus form mycorrhiza. Glomus fungi है, right? कौन सी ये Glomus genus है? Form mycorrhiza. The fungal symbiont in this association absorb phosphorus from soil and pass it into plant. Plant having such association so other benefit also, such as a resistance to root-borne pathogen. Right? ये function extra याद रखो. Phosphorus का तो absorption किया, but even resistant to root-borne pathogen. Root-borne pathogen से भी even tolerate salinity and drop. Drop એટલે शुष्क, dry हो जाना. Right? Salinity ले कुछ salts कम हो जाना, उसको यहाँ पे salinity बोलते हैं. Tolerance of to salinity and drop. And overall increase in plant growth and development. Can you tell what advantage the fungus derive from this association? आगे देखते हैं. Cyanobacteria are autotrophic microbes widely distributed in aquatic and terrestrial environment, many of which can fix atmospheric nitrogen. कौन से? एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया. समझे? ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? याद करो. साइनोबैक्टीरिया क्या है? Cyanobacteria is photosynthetic bacteria. Generally, bacteria have no, yes, chloroplast, right? Even no chlorophyll, but cyanobacteria have chlorophyll and photosynthesis वो कर सकता है, इसलिए autotrophic बोला है. So, Anabina, Nostoc, Oscillatoria. In paddy field, cyanobacteria serve as an important biofertilizer. Blue-green algae
उसको ही बोलते हैं ब्लू ग्रीन algae. Also add organic matter to soil and increase its fertility. Currently, in our country, a number of biofertilizers are available commercially in market, and farmers use this regularly in their field to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizer. Right? यानी केमिकल का यूज कम से कम होगा. ओके, ये कंप्लीट करो. फिर से बोल रहा हूँ, ये फ्राइडे को आपका 8 एंड 10 चैप्टर का टेस्ट है. ओके, उसकी थियरी 20 मार्क, एमसीक्यू 20 मार्क. और संडे को सेकंड चैप्टर, 13 चैप्टर एंड 15 चैप्टर. भूलना नहीं है. ओके, हैव अ गुड डे. बाय बाय.